tried to find out certain ratios: price to sales, EV upon sales, EV upon EBITDA, then price earning ratio. And then we also checked with our screener that more or less it was matching, isn't it? Now there are various ratios which we are used. Okay, we are using to calculate how the company is valued. Okay, now then we arrived at the average. Okay, this average and median. तो ये average और median आ गया. Okay, fine. So we have calculated two numbers: average ratio of the industry and the median ratio of the industry. Now tell me which is a better mechanism, the average or the median? Median. क्यों? हाँ, median जो है that is a more representative because data can be skewed. Because here if you look, price to sales ratio 6.28 of one other company, okay, which is an outliner. Okay, rest are like 0.63, 1.53, 1.7, 2. Now this seems to be totally outliner. This is trading at a very high this thing. Either when we are comparing companies, if we have a large base of say 100 companies, which is not possible in India because we may have only 7, 8, 9 companies listed on the stock exchange. Rest of the companies may not be listed on the stock exchange. They are foreign companies coming in India and selling their automobiles in India. They are not listed on India. Okay. So if you have a large data, then we have lesser problem. Then we can say the averages or the medians are very good. But if the sample size is very small, then we may not get a right average or right median also at time. Okay. So in that case, we may exclude one of the outliner. Outlier को हम exclude कर दें, तो भी हम कर सकते हैं. Okay. But anyway, I'm not excluding at the moment. I'm not excluding 6.28 वाला नहीं कर रहा मैं. हमने उसी से numbers चलेंगे. Okay. Now let's look at the price. Let's say, for example, I make it 0. So that means the median goes to 1.26. Okay. Let's say median is 1.0. So on an average, the automobile companies, listed companies in India, trade at 1.2 times its sales, average, median. Okay. But when I include this, the first company, which is Aisha Motors, then it goes to 1.5. अगर हम outlier को निकाल दें, तो 1.2 आ जाती है. So which is better reflective of the industry? 1.2 rather than 1.5 because it includes one other company which is trading at a very huge price to sales ratio because of its own reason. We have to look for why it is. Okay, fine. But let's stay with the number here. So we say that India, the price to sales ratio is 1.5 or say 1.1. Now all the companies which are trading above that, they are overvalued. All the companies which are trading below that are undervalued. Okay, fine. If you have to make one very simple kind of assessment, we say that all the companies which are trading at a lower price to sales ratio. Now, for example, Tata Motors is trading at 0.63, isn't it? It's the most company. Now, this is the cheapest, but we can't say it is the best company. It is today trading at a very low price to sales this thing, but the story never ends here. It has to be gone a little bit forward. So then the next company is Ashok Leyland, which is trading at 1.17. Okay. Now Tata Motors and Ashok Leyland are trading at a price to sales ratio of below that the industry. Okay. But on that account is cheap. But do all the companies look like same? Tata Motors and Ashok Leyland have a good component of commercial vehicles like bus and truck, and अशोक लीलैंड का भी बस ट्रक है, और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं मारुति सुजुकी, which is a purely a passenger car company. Okay, fine. So it may not be a very appropriate comparison also. But since we have no choice, because we have these only 4, 5, 6 companies which are listed on the stock exchange, so we say that the companies can have different price to sales ratio because of their different product mix. Okay, so we have to keep that in mind. Fine. So a company which is selling products to retail customers, they will always command a higher price to sales ratio. The companies which are selling to industry, to economy, fine, for selling their goods because they're used by industries. All truck and buses are used by industries, and then so they will always command a lower price to sales ratio. So we can assume that.
Let's say that suppose we have to think about कि इसको कैसे हम मतलब जो है address करें. So if you look at all the all the FMCG companies, the companies which are selling to the retail, to the public, they generally command a higher. They are always trading at a higher value. Go to Hindustan Unilever, go to a company like Dabur. So if you look their price to sales ratio, they are very high because they are selling directly to the customers. Whereas the companies which are not directly to their intermediate products, they are selling to industry and the industry is using it. So those companies may be trading at a little lower price to sales ratio. So that can be one reason for it. Okay. So before making a conclusion whether this company is cheaper or this company is costlier, we should control for that difference. Okay. For example, when you look at a real estate, a particular house will be selling at a very higher price because it is sea facing. The other house is not sea facing, so it will command 10 to 20% lower price. So we say that it is facing golf course. So that's why its value is higher. Or it is north facing, it may command a little value. So there are some differences valuing similar properties. एक ही property के हैं, एक property आगे एक पीछे है. एक तो गेट को फेस करती है, golf course को फेस करती है, तो golf course property will be costlier. Okay, so there can be differences on account of various reasons. So we should always consider that. Now, so that is one. Okay. Now the second is basically, as we go along to PE ratio and other things also, those companies, there are two more things. Okay, the companies which have a great future, they will always command a higher multiple. The companies which are going to grow like anything, which has a great future, like Maruti, okay, it is making, it's a prime company in India. I mean, of course, other companies are not there, like, the Toyota and other things are not there, which are international companies, or there are other companies which are not listed. So all the companies which are, selling to the public, and they are good companies, they are managed well, they have a great future in terms of growth story. Growth means their earning per share is going to grow at a much higher pace. Those companies will command a higher, these ratios will be always higher. Okay. So we must control for them. Is there any mechanism to control it? Yes, there is one. So we'll understand that. Second is, there are two things mainly. Apart from the differences which comes from their products, there are two more differences which are very important. One is what? The first which I explained was what? The growth. Growth in earning per share. Okay, if the company has a great future, it will command a higher multiples. Second is the riskiness of the company. If the company is more risky, more volatile, risky means if the profits of the companies keep changing up and down very frequently because of the economic situation which is happening in the world, there are some companies which don't change so much. Okay, if the economy is going up and down, those companies' profits are going still. Like if you look at Hindustan Unilever, their profits are growing irrespective of what is happening to the economy. Of course, little still economy, but not that much compared to a company which is, say, real estate, for example, DLF, a company which is making houses, the companies which are running airlines businesses, are getting great. This is very important. Please focus. So all those companies which are in, consumer discretionary products, they are more volatile. They are more riskier. Which are those companies? Which are producing and selling consumer discretionary products, where the consumers uses their discretion to buy those products. Like suppose if I don't have money, if I'm, worried about my job because the economy is coming down, I won't buy a car. I'll hold on to buy a car or a house. Fine. And it may happen with others also because, the economy is coming down, then people have this, they don't spend money so much. I will not buy fridge, I will not buy TV, I will not buy car, I will not buy house. Okay. Generally, this will happen. If suppose my income is at stake, what I'm earning as an individual, if I find the economic situation is coming down, suppose, it was a COVID time. So we held up with all our buying instincts. We were not buying new clothes. We were not buying even new clothes in the time of COVID. Okay. So all the companies which are, consumer discretionary, where we can use our discretion to buy them products, we can stop their products if we think so. Those companies will have more volatility in the profits and they will become more riskier. Okay.
But the companies which are manufacturing, products of daily use like Hindustan Unilever or Colgate or Patanjali or any company, okay, those companies, we are still going to buy their products. Even if there's COVID, we are buying, consuming products. It will not affecting, but of course, some people are not able to buy it because they don't have the money. That's something different. But those companies will keep growing. Okay, they'll keep, their profits will not come down because of economic upheaval happening in the world. The macro situation of the country or the world changes, so does our buying patterns. Okay, for if the companies as such, they are called discretionary companies. I mean, their products are being only bought in good times. In bad times, people hold their decision. So those companies, they are companies that are cyclical in nature. Sometimes they do very well. There's an upcycle. The economy is doing well. Those companies will start making good profits. But when whole economy is coming down, and there's a down cycle, those companies will profits will get reduced. So उनका शेयर प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है ना? और हिंदुस्तान लीवर का प्रॉफिट कम होता है, ऊपर नीचे ज्यादा. So how do we look at? What is the number that we look at to find the company is more risky or less risky? There are two measures, standard deviation and beta. I'll explain you what is standard deviation and beta later on. We look at the standard deviation and beta. If the beta is more than 1, the company is riskier. If the beta is less than 1, the company is less risky. Okay. Now, higher the standard deviation, more risky is the company. That means more volatile its cash flows and profits of the company. Fine. Is that okay? Do you understand this, or should I explain through a very good example? Let's just hold on. अभी हम मैकेनिक्स में नहीं जा रहे हैं. हमें लेमैन लैंग्वेज में समझना है कि बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है. अब स्लोप है, वो तो रिग्रेशन टेक्निक से आपने बोला कि स्लोप निकाल लिए ना. If you have to understand something, you have to understand the concept. As we are talking like normal person, ये अच्छा है या बुरा उसका समझना है. Okay, you're right. I'm not saying you that, but we have to find out what does it they really mean to us. If you have to use common words to understand what is beta and standard deviation, layman language में, simple language we use in our house, in that language we should understand those. Okay. Now, first of all, let's talk about the standard deviation. Now, if I say that there is a river which is 1 kilometer long, and the depth of the river is 5 feet. एक नदी है, उसकी गहराई 5 फीट है. ओके, अगर आप उसमें छलांग लगाओगे, will you, and you don't know how to swim, what are the chances of survival? 0 or something? हाँ, सर्वाइवल तो है क्योंकि आप सब 5 फीट से ऊपर हो तो बच जाओगे. भाई आपकी हाइट 5.5 फीट है तो आप डूबोगे तो नहीं. तो सेकंड क्वेश्चन इज what is the standard deviation? Because the river is never 4-5 feet flat. It's not like a swimming pool. It will be up and down, up and down. So I missed the word. I said the average depth of the river is 5 feet. Somewhere it can be even 10 feet deep. Somewhere it can be 3 feet deep. और आप कौन सी जगह पे छलांग लगा रहे हो पता नहीं है. अब ये आनंद था, उसने अलग से छलांग लगाई, इन्होंने कहीं उस कॉर्नर से लगाई. इनके छलांग लगाने में वो 20 फुट गहरी थी. अनंत तो गया, आप बच जाओगे क्योंकि आपके वहां 3 फीट था. सो छलांग मत लगाओ, क्योंकि पूछो कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है. सेकंड क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज द वोलेटिलिटी. मैंने आपको मीन बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन बताया. अगर मैं बताऊं स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है तो सब लोग छलांग लगाओ तो सब बच जाओगे, क्योंकि इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल फ्लैट, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता चला जाता है 10%, 20%, 30%, तो चांसेस ऑफ डूबने के ज्यादा होते जाते हैं. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज टेलिंग यू द रिस्क, हाउ वोलाटाइल इज द रिवर. इज दैट ओके? गॉट इट? तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर सब चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर सब चीज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस द मीन, there is 67% of the chance that river will be in that space. Okay, like suppose मैंने बोला 5 फीट है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10% है, तो 5.5 और 4.5 के बीच में ही 67% चांस है रिवर उसी के इर्द गिर्द होगी, तो आप नहीं डूबोगे अगर आपकी हाइट 5.5 से ऊपर है. लेकिन वहां कहानी खत्म नहीं होती है.
दो स्टैंडर्ड डेविएशन 97% के स्पेस को कवर करती है। तो यानी कि दो स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ तो 6 फुट और 4 फुट के बीच में होगी। 97% है कि वो 4 फीट और 6 फीट की गहराई में है। ओके, और 99% चांस है कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस, और 1% चांस है कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर आप सोचते हो कि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 10% है या 20% है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, इट विल टेल यू वेदर द रिवर इज सेफ फॉर यू और नॉट। फाइन। अगर हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम देखें तो अब कभी कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं प्रिवेल करता। मैंने आपको बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 99% 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस 3 स्टैंडर्ड माइनस के इर्द गिर्द वो गहरी होगी। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है। जब आप पैसा लगाते हो मार्केट के अंदर, आप देखते हो कि रिलायंस 15% रिटर्न दे रहा है पिछले 10 साल से। अब लेकिन अगर आप देखो तो किस साल तो उसने 20% नेगेटिव रिटर्न भी दिया था। आपने जो निकाला मीन रिटर्न, वो तो एवरेज रिटर्न निकाल दी है ना। किसी टाइम वो 5% रिटर्न भी दी थी, किस टाइम तो 20% नेगेटिव भी दिया था, किस टाइम वो 40% प्लस भी दिया था। तो आपने तो एवरेज से लगाया कि 15% रिटर्न मिलेगी। तो आप जब इन्वेस्ट करते हो, आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आप कौन से नदी के किनारे से छलांग लगा रहे हो और स्टॉक खरीद रहे हो। क्या अगले साल 20% नेगेटिव जाएगी या 20% ऊपर जाएगी, वी डोंट नो दैट। इज दैट ओके? सो जो मेन रिटर्न होती है वो सिर्फ आपको एवरेज बताती है कि ये एवरेज रिटर्न है स्टॉक की, बट दैट इज नॉट द एंड। वी शुड लुक एट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो। जैसे हम एफडी होती है, एफडी में कितनी मिलती है? 7% रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 0 है। हर साल आपको 7-7% मिलेगी। लेकिन स्टॉक के साथ ऐसा नहीं होता है, स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द रिस्क ऑफ द स्टॉक। इज दैट क्लियर? अब आता है बीटा। अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है टोटल रिस्क, सारा रिस्क। ओके, फाइन, कंप्लीट रिस्क ऑफ द स्टॉक। बट हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाते, हम 10 स्टॉक में पैसा लगाते हैं, 15 स्टॉक में पैसा लगाते हैं। ओके, तो दो तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है मार्केट रिस्क, एक होता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। एक तो उस कंपनी का रिस्क है, और एक मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इकोनॉमी अच्छी होगी बुरी होगी। तो अगर हम बस इस पर ब्रेक रखें, तो हम कहते हैं कि अगर हमने पैसा लगा दिया 20 स्टॉक में, तो हमने मार्केट रिस्क को कॉन्कर कर दिया। कोई कंपनी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कोई कंपनी नीचे जाएगी, तो मार्केट जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है वो खत्म हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो। रह क्या जाएगा? सिर्फ मार्केट रिस्क। सिर्फ मार्केट रिस्क रह जाएगा ना। जब आपने 20 स्टॉक खरीदे, ओके, तो कुछ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है ऊपर जाएंगे, अच्छा था बिजनेस चला उस कंपनी का, नया प्रोडक्ट आया, बढ़ गया, उससे फायदा हो गया। बट एक कंपनी आपने ऐसे खरीदी जिसका प्रोडक्ट गिर गया, बिकॉज उसका माल बिका ही मार्केट के अंदर। ठीक है, तो लेकिन जब आप 20 कंपनी में लगा देते हो, तो मार्केट कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, आपको कुछ कंपनियों में गेन हो रहा है और कुछ कंपनियों में लॉस हो रहा है, वो आपस में कैंसिल हो रहा है। आपको कोई फायदा नहीं होने वाला 20 स्टॉक में कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। आपके पास सिर्फ रह जाता है मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क के लिए क्या है? टोटल रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन का। मार्केट रिस्क के लिए क्या है? बीटा। अब मार्केट स्टॉक, अगर सपोज मैं आपको बताऊं सेंसेक्स 10% बढ़ा, ओके, एक कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, वो 20% बढ़ गई, तो बीटा 2। और सिमिलरली अगर मार्केट 10% गिरी और दूसरी जो कंपनी में पैसा लगाया वो 20% नीचे गिर गई, तो फिर दो ही माइनस दो ही नहीं, दो ही बीटा 2। अगर मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान लीवर, अगर सेंसेक्स 10% बढ़ता है, लीवर 5% बढ़ता है, और 5% ही गिरता है, अगर सेंसेक्स 10% गिरता है तो 5%। व्हाट इज द बीटा? 0.5। ओके, तो हिंदुस्तान लीवर का बीटा कम है, कम रिस्की है कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट। सेंसेक्स कैप्चर्स होल ऑफ द मार्केट। इट हैज रिप्रेजेंट निफ्टी, सेंसेक्स या कोई भी इंडेक्स में जिसमें 500 शेयर है, तो क्योंकि हमारा जो सेंसेक्स और निफ्टी है, दैट कैप्चर्स होल ऑफ द इंडस्ट्री। सो वी लुक एट द बीटा ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द सेंसेक्स एंड द compared to the stock. And if the stock is having a higher volatility compared to the Sensex, which is riskier than the market. If the stock is having lesser volatility compared to the Sensex volatility, we say this is less. या तो एक होगा या एक से ऊपर होगा। अगर एक है तो इसका मतलब सेंसेक्स जैसे ही चलता है, सेंसेक्स 10% बढ़ता है, स्टॉक भी 10%। सेंसेक्स 10% मिलता है तो स्टॉक भी 10। ऐसा बहुत कम स्टॉक होते ही नहीं।
तो या तो वो सेंसेक्स से ज्यादा वोलेटाइल होगा या सेंसेक्स से कम वोलेटाइल। तो बीटा या एक होगा, सॉरी एक से ऊपर होगा, एक से नीचे। अगर एक से ऊपर है तो रिस्की ज्यादा है और एक से कम है तो रिस्की कम है। तो अगर हम अब देखें यहां पर, तो हमने बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन रखा हुआ है। अब बताओ कि कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा रिस्की है, मतलब आइटम वाइज बताओ कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 1.97, तो वो वाला स्टॉक ज्यादा रिस्की है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी सबसे ज्यादा रिस्की है। इज दैट ओके? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20%। हैव यू गॉट इट? ज्यादा रिस्की है either of standard deviation or beta, तो it will command a lower premium। सारे मल्टीपल नीचे बैठे हैं तो लोग खरीदेंगे, ये रिस्की है, मतलब उस टाइम नहीं खरीदेंगे, इकोनॉमी चल पड़ी तो कहेंगे आप खरीदोगे या आपके स्टॉक भागेगा। तो जब इकोनॉमी बढ़ती है तो आप हाई बीटा हाई स्टैंडर्ड, और अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है या उस कंपनी बढ़ नीचे जा रही है तो आप उस स्टॉक से बच के रहें, कम नहीं लेना, ये एक मंत्र है। To buy stocks, the stocks can be risky on account of beta as well as standard deviation, and when you buy stocks, if you have to be a very conservative buying, then you buy low beta stocks। लेकिन गुड टाइम में आपको प्रॉफिट मिलेगा, गुड टाइम में वो तो हाई बीटा तो बढ़ेंगे, आप देखते रह रहे हो लोगों को, यार ये तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपने गुड टाइम में स्टॉक खरीद लिए, जैसे एयरलाइन स्टॉक खरीद national travel हो रही है, बढ़ रहे हैं, those companies will show higher returns। If you put your money into those stocks, आपका स्टॉक नहीं बढ़ेगा, वो स्टॉक ज्यादा बढ़ेगा। In the return on those stocks, okay? Fine, but ये जो better rate है statistical में, ये कोई ऐसे नहीं है, बाइबल है, because you have to look at many things to take your decision, not only the beta, not only the standard deviation, because they are just giving you some kind of a story and you have to latch on to the story with caution। अच्छा स्टॉक है, इसका भी लो है, इकोनॉमी डामाडोल है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कौन सी चीज कब खरीदेगी, कंपनी प्रोडक्ट चेंजेस, कंपनी का बिजनेस चेंज हो गया, बीटा किस चीज पे डिपेंड है, अगर बिजनेस बढ़ जाएगा होता है, कंपनी कितना उधार लिया होगा, कंपनी ने ज्यादा उधार लिया होगा तो कंपनी बहुत रिस्की है, तो उसका बीटा बढ़ जाएगा। ओके, जब बीटा कैलकुलेट करोगे देखो कि उसका बीटा भाग रहा है। I'll tell you how to calculate beta using type of business and the leverage, how much loan the company has taken। Leverage means more amount of loan the company has taken। कैपिटल स्ट्रक्चर जो ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज आपने पढ़ा होगा, वी विल रिविजिट दैट। इज दैट ओके? फाइन, अब हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। एनी क्वेश्चंस प्लीज प्लीज। वाज इट गुड नॉलेज? ओके, एक सेकेंड मैडम, जरा रुक जाओ, मैं मेरे को भी तो मैं आदमी हूँ, मुझे